कि वो वीडियो जो भी है वायरल हुआ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात पब्लिक प्लेस की, तो पब्लिक प्लेस में ही लोग पहनते हैं, घर में तो लोग कैसे रहते हैं वो आपको भी पता है, पहनते नहीं पहनते हैं, राइट। नारी समाजक लज्जित কৰা কিছুমান এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াত অতি সোনকালে ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে কিছুমান মহিলাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে যে নিজৰ কাপোৰ খুলি কেনেধৰণে উলংগ অৱস্থাৰে তেখেতলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰে, অতি সহজতে ভাইৰেল হ'বৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো নিজৰ বস্ত্ৰ খুলি এটা ঘিণ লগা দৃশ্য, কিয়নো এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন ৰীল পোৱা যায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিকালি খুলিবই নোৱাৰি এইসকল মহিলা কাৰণে তেখেতলোকে এটা ঘিণ লগা কাৰ্যকলাপ কৰি আহিছে। আজিৰ ঘটনাটো মধ্যপ্ৰদেশ ইন্দোৰৰ ঘটনা কৈ আছোঁ। এগৰাকী মহিলা যিগৰাকীয়ে কেনেধৰণে ইন্দোৰৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত কেনেধৰণে ৰীল বনাই তেওঁ ইফালে পা সিফালে টহল দি ঘূৰি ফুৰিছে, কিছুমান এনে আকৃতি ভংগী দেখুৱাই তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু বিভিন্ন আকৃতিৰে তেওঁক চাইছে আৰু বহুতো ঘিণ লগা দৃশ্য, বহুতে মুখ ঘূৰাই দিছে ঘিণ লগাভাৱে তেওঁক চাইছে, কিয়নো এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে নাৰী সমাজক এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম বুলি ক'ব পাৰি, নাৰী সমাজক লজ্জিত কৰাৰ নিচিনা এটা বৃহৎ ক্ৰাইম, ডাঙৰ ক্ৰাইম বুলি ক'ব পাৰি, ঘিণ লগা এটা দৃশ্য। কিয়নো তেওঁ এইসমূহ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট কৰে, চাব পাৰে তেওঁ কেনেধৰণে বুকু ফুলাই কৈছে যে মই একো ভুল কৰা নাই। চাই লওক প্ৰথমতে এইগৰাকী ইন্দোৰৰ এগৰাকী যুৱতী, নিজৰ ঘৰৰ এড্ৰেছো দি দিছে তেওঁ। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এনেধৰণৰ মহিলাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক কি বুলি ক'ব, কমেণ্টত জনাব। একদম ঘিণ লগা দৃশ্য। तो मैंने इतने भी बुरे कपड़े नहीं पहने थे, मैंने देखा इंदौर में इससे भी बुरे कपड़े पहनते हैं फीमेल, जो लड़कियां होती हैं वो पहनती हैं। और दूसरा ये कि जो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जो मेरा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मोस्टली इंदौर के जो न्यूज चैनल है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि आप मुझे इसलिए मेरा वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि आपको भी व्यूज चाहिए, आपको भी वायरल होना है, आपका चैनल भी आपको आगे बढ़ाना है, राइट। तो मैं चाहती हूँ अगर आप में से किसी को भी मेरी बातें रिकॉर्ड करनी है तो कर सकते हैं, मैं सफाई देती नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि वो वीडियो जो भी है वायरल हुआ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि ऐसे कपड़े बहुत सारे लोग पहनते हैं। रही बात पब्लिक प्लेस की, तो पब्लिक प्लेस में ही लोग पहनते हैं, घर में तो लोग कैसे रहते हैं वो आपको भी पता है, पहनते नहीं पहनते हैं, राइट। वही कहना चाहूंगी सभी न्यूज चैनल से जो मेरा वीडियो वायरल कर रहे हैं, हर 2-2 मिनट में नई नई न्यूज आ रही है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और काफी लोग मुझे पुलिस वगैरह की धमकी दे रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगी मैं विजयनगर में रहती हूँ, 78 नियर बाय वृंदावन। तो आप में से किसी को भी मुझसे बात करनी हो, मेरा इंटरव्यू लेना हो, पर्सनली आपको मिलना हो, तो आप में से कोई भी मुझे যুৱতী, মহিলা যুৱতী এটা কলংকিত বুলি ক'ব পাৰি এইসকল, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ তেখেতলোকে কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত। বুকু ফিন্দাই কৈছে যে মই একো ভুল কৰা নাই, কাৰোলৈ ভয় নকৰোঁ, ঘৰৰ এড্ৰেছ দি দিছে, আহিলে ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰে। কেনেধৰণে তেওঁ নিজৰ বুকু ফিন্দাই সাহস দেখুৱাই তেওঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, এটা সৰু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাইৰেল হৈছে তেওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে, বিভিন্ন মহিলাই পিন্ধে, সেইবাবে তেওঁ তেনেধৰণে ভাইৰেল হ'বৰ বাবে এটা লজ্জিত কৰা ঘটনা নিচিনা তেওঁ কাম কৰিছে, কিয়নো এটা ঘৃণনীয় কাম। তেওঁ তাৰ প্ৰতি কোনো দুখ নাই, তেওঁ তাৰ প্ৰতি গৰ্ব কৰিছে, কিয়নো তেওঁ কৈছে মই কাৰোলৈ ভয় নকৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ দেখিছে, সেইবাবে তেওঁ কৰিছে ভাইৰেল হ'বৰ বাবে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰেছাৰত তেওঁ ভয়ত পিছত তেওঁ কোমলি যায় বুলি ক'ব পাৰি। তেওঁ যি বুকু ফিন্দাইছিলে সেই বুকু তেওঁ চাপ খাই যায় আৰু তেওঁ পিছত ভুল স্বীকাৰ কৰে। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চাব পাৰে তেওঁ কেনেধৰণে পিছৰ ভিডিঅ'ত তেওঁ ক্ষমা খুজিলে তেওঁ সকলোৰে আগত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে। এয়াই আজিৰ মহিলা বুলি ক'ব পাৰি, যুৱতী মহিলা এনেকুৱা ধৰণৰ দেখি পেলাই তেওঁলোকে আগুৱাই গৈ আছে। ভাল এটা কাম দেখি নকৰে, কিন্তু বেয়া কামটো অতি সহজতে তেওঁলোকে আঁকোৱালি লয়। এয়াই হ'ল আজিৰ
প্ৰজন্ম দেখি পেলাই শিকে, বেয়া কামটো দেখি পেলাই অতি সহজতে শিকিব পাৰি, কিন্তু ভাল কাম এটা দেখি পেলাই অতি সহজতে কেতিয়াও নিশিকে তেখেতলোকে। ভিডিঅ'টো চাই লওক, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্টত জনাব। हाय गाइस, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफी बोलना चाहूंगी, लाइक सॉरी बोलना चाहूंगी। मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। उन सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ है मेरे वीडियो से, और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने बहुत गलत किया है। और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दूसरा है कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है जो सोसाइटी में ये सब करे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पब्लिक में वीडियो नहीं बनाना चाहिए था।